Moving on to the next question and the last one in the series of day 2 EC solutions from the subject signal systems. Question number 59 from the topic Fourier transform, discrete time Fourier transform, is as follows. Question number 59, 2 marks. You have to answer divinity. Question number 59 is given the relationship between any n length sequence. The relationship between any n length sequence x of n and its corresponding n point discrete Fourier transform. Corresponding n point discrete Fourier transform x of k, capital X of k, is defined as we all know, x of k equal to Fourier transform x of n. Right. Now is given another sequence y of n is formed as y of n equal to Fourier transform of x of n. Okay. Of the sequence x of n equal to 1, 2, 1, 3. The value of y of 0 is, question basically demands the value of capital Y of 0 when y of n is this sequence. Fourier transform 4 times of x of n. Let's move to solution for this question. Solution आसान ही है. We will use the cyclic property of discrete time Fourier transform and discrete Fourier transform DFT. Okay, cyclic property is very easy actually. We have to manipulate the inverse function in the multiple times occurring Fourier transform in such a way that it comes in the form of inverse. Let's say like this. I'm saying, as we all know, Fourier transform of xn is x of k, capital X of k. Okay, it's nothing but summation n equal to 0 to n minus 1 for discrete sequence of length n, x of n. So here is n equal to 0 to n x of n e to the power minus j 2 pi k n by n. This is definition. ये definition mathematical definition इस ये होता है. अब इसका हम लोग अगर इनवर्स पेयर लेते हैं उसको वो क्या हो जाता है, x of n 1 by n summation k equal to 0 to n minus 1 capital X of k e to the power minus नहीं होता इधर j 2 pi k n by n. राइट, ऐसा होता है. now इन दोनों के यूज करेंगे अगर 2 टाइम्स Fourier ट्रांसफॉर्म हो उस केस में. there are if Fourier transform occurs 2 times, you use these two
having this pair, inverse pairs. Okay, now what we can write? Summation, say let this be y, suppose this be y, y of n, or say as y of n is given, let's take the same other series, let's say z of n. Okay, तो हम इसका कंसीडर करते हैं z of n, ठीक है। और z of n का जैसे ये z of n, सपोज ये z, ये आप ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखता है, एक फॉर्म ऐसे लिखता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म x of n to f इनवर्टेड x of k, so it is फूरियर ट्रांसफॉर्म x of k is right। फूरियर ट्रांसफॉर्म x of k क्या हो जाएगा? समेशन k equal to 0 to n minus 1। जैसे इसमें हम लोग x of n की जगह कैपिटल x of k रख दिए, कैपिटल x of k to the power minus j 2 pi k n by n। नाउ ठीक है, हम लोग दोनों साइड को k को हम लोग माइनस के से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। k को हमने इसको सपोज z of n ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग बोथ साइड्स को n को माइनस से रिप्लेस करते हैं, n से कैपिटल n से डिवाइड कर देते हैं, और टेकिंग माइनस रिप्लेसिंग n by minus n on both sides and divided by the whole meaning capital N। So z of minus n by n you get 1 by n summation k equal to 0 to n minus 1 x of k to the power n replace n by minus n, so this minus gets vanishes, you get j 2 pi k n by n। Can I draw the similarity? ये किसके साथ बराबर हो रहा है? ये हम लोग ने ये निकाला था ना, ये वर्ड टर्म्स इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, सेम है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली x of n, ठीक है, राइट। तो z of n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप फिर से हम लोग रिप्लेस कर दें n को माइनस n से, z of n को n हो जाएगा z of n by n, और इधर x of n था, x of minus n हो जाएगा। Now taking n to that side, we get z of n equal to x n x of minus n। So here there are two times Fourier transform, so n comes once and minus 1 to the power 1। so अगर n दो बार Fourier ट्रांसफॉर्म अगर होता है तो n का पावर इधर 1 होता है और माइनस 1 भी एक बार आता है, तो एक माइनस रह जाता है। और इसको हम लोग अगर ये करते हैं, जनरलाइज करते हैं, तो f of डॉट 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 अगर n टाइम्स होता है यानी से k टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं n to the power k by 2, यहाँ k जैसे 2 है तो 2 को 2 by 2 1, तो n to the power 1, x of minus 1 to the power k by 2, यहाँ पे k कितना है 2 है, तो 2 by 2 तो minus 1 to the power 1 मतलब minus 1, तो माइनस रह जाएगा and n, ये जनरलाइज हो जाता है सेकंड प्रॉपर्टी। मैं डेराइव किया, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं था,
derive it and then use this, generalize this. तो अब इसमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, y ऑफ n निकालते हैं जैसे y ऑफ n कितना है, सिमिलरली f ऑफ कितना टाइम्स, 4 टाइम्स है, तो फिर क्या है बेसिकली k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 मतलब n टू द पावर 4/2 x टू द पावर x ऑफ -1 टू द पावर 4/2 टाइम्स n, मतलब क्या हो गया n स्क्वायर x ऑफ n -1 टू द पावर 2 होता है, -1 स्क्वायर मतलब 1, तो n स्क्वायर x n। तो हम लोग इससे हम लोग लिख सकते हैं कि y ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर x ऑफ n। यहाँ n मतलब लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, लेंथ ऑफ द सीक्वेंस है गिवन इज 0 1 2 3, so 4, so it will be n square मतलब 4 square times x of n, that is 16 x of n. Now finally what we need to do, finally we need to calculate y of capital Y of 0, which is nothing but the Fourier transform of y of n for at k equal to 0. Putting k equal to 0 in this expression, let's say this is y and this is capital Y, we put k equal to 0, then all the exponential terms vanish, exponential terms 0 हो जाता है। बेसिकली हमको क्या मिलता है x0 plus x1 plus x2 plus x xn minus 1, यहाँ पे n4 है तो x0 plus x1 plus x2 plus x3, तो यहाँ पे ये जब x था तब ऐसा था, अब x को अगर y से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये वाला तो वैनिश हो गया, k 0 है इधर, ये हो जाएगा y0 plus y1 plus y2 plus y3, और y क्या है, y of n क्या है 16 x of n, x of n क्या है ये सब, तो बेसिकली ये हो जाएगा कितना, जगह कम मैं यहाँ पे करता हूँ, y of 0 आपका हो जाएगा बेसिकली 16 टाइम्स, क्योंकि 16 कॉमन है, x 0 plus x1 plus x2 plus x3 मतलब 16 टाइम्स 1 plus 2 plus 1 plus 3, right, 1 plus 2 is 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 3 is 7, 7 into 16 is 112. So y of 0 we get is equals 112. This is a numerical answer to question, हम लोग को इसमें numerical value फिल करना है, तो y of 0 का करेक्ट वैल्यू जो हम लोग को साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ Fourier ट्रांसफॉर्म है उसे मिल रहा है वो है 112. I have shown the detailed steps how to obtain the answer. Let's summarize. Applying cyclic property, first deriving x of k in terms of x of n, taking the inverse, using both these equations to derive and generalize the relation between the nth time cyclic Fourier transform and the actual original discrete sequence, which you get as x z of n equal to n times x to the minus n, or taking Fourier transform k times we get n to the power k by 2 x of minus 1 to the power k by 2 times n, where x of n is the original sequence, this is the Fourier transform taken k times in cyclic way. So in the here k is given as 4, so 4 times Fourier transform is taken, so we get y of n as n square x of n from these relations. So just we put n equal to 4, the length of sequence is 4, 4 terms are there, so we get y of n equals 16 x of n. Now y of capital Y of 0 is the Fourier transform of y of n calculated at k equal to 0, 0 frequency. So there we put here generalized expression for discrete Fourier transform, we put k equal to 0, we get y of 0 is the sum of y of 0, y of 1, y of 2 and y of 3, which is nothing but n square times x0 plus x1 plus x2 plus x3, x1 means 16 times x0 plus x1 plus x2 plus x3, which is nothing but 16 into 1 plus 2 plus 1 plus 3, which you get as 112. So I have described the process, the detailed steps, and also explained the logic or the reason behind calculating or proceeding in this way. I hope the solution is clear. A bit tricky question actually, but I have tried to explain it. I have tried to simplify it and explain it using detailed steps.
and explanation. Hope the solution is clear. If you still have any doubts or queries, please feel free to ask in comments. That's all for solution to this question from signal systems, and also that's all for the subject signal systems. Thank you.